friends, welcome to Anglo Dictu once again. This is Pranesh Mishra with you, dealing with exam special question framing. So we often listen one dialogue that यार क्वेश्चन जरा मुश्किल था, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी हमने उसका आंसर नहीं लिखा। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे तैयार किया जाता है? क्या हर साल क्वेश्चन का थीम बदल जाता है या कॉन्टेक्स्ट बदल दिए जाते हैं? नहीं, चैप्टर्स तो वही रहते हैं। फिर क्यों हर साल हमें ये लगता है कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो क्वेश्चन का है वो हमें भारी पड़ता है, हम समझ नहीं पाते। तो आखिर क्या होता है क्वेश्चंस के साथ? हाउ दे मेक द लैंग्वेज क्वेश्चन सेटलर्स? Let us analyze it to get this confidence for the examination, to crack any examination of any school, any college, or wherever you go. Questions, even in spoken questions, how they make the questions. Answering is easy, making question is problematic. Yes, I drink water, saying this is easy, but how do I drink the water? Using these, making question, we feel it difficult in all the languages. So let us see to it that how question framing is mechanism works and how question settlers set the questions. After all, कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसको वो फॉलो करते हैं और उनके ट्रिक में हम फंस जाते हैं और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हम भूल जाते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने लिया है वो है हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फॉर योर एग्जाम्स, लोड्स एंड हॉट्स। ये क्या है? लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और ये है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं 2-3 नंबर के लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से, जिसके आंसर देने बिल्कुल आसान होते हैं। और फिर होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें आपको चैप्टर का एनालिसिस के रूप में यूज होता है। पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि आपको टेक्स्ट को टूल के रूप में यूज़ करना पड़ता है। यू हैव टू यूज़ योर टेक्स्ट एज ए टूल। तो टूल के रूप में तो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें जनरल फैक्ट्स होते हैं नॉलेज से रिलेटेड, जो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण आप लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को आराम से कर लेते हो, जबकि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आपको समय लगता है। अगर सही में आपने चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है तो लैंग्वेज को समझना भी आपको मुश्किल होता है। कुछ तो वो शब्द भी ऐसे डालते हैं कि आपको समझने में परेशानी होती है। अगला पॉइंट मैंने लिया है इनवैलिड आंसर ऑफ अ वैलिड क्वेश्चन। सो वी जस्ट राइट द आंसर if we are confused and that become invalid. So question is valid, prepared by the question settler board, and then if you have not revised, you have not understood the language, after writing also your answer is invalid. It is not according to the criteria or up to mark, and you get less marks though you have attempted it well. So basics of question. Next point I have taken basics of question and verbs associated to them. Which type of verbs or language they use while making question. Next point is question stems, means question initiators, how questions starts. I'll give you some samples also in future. Question analysis. In total I can say that we are going to discuss questions, we are going to analyze questions, all types of questions only at Anglo Dictu with Pranesh Mishra. Let us go to next pattern, the basics of questions. What are the basics of questions? You know, the question base are WH questions. So with WH questions, who, where, when, why, what, which and how, these type of questions are made. So if I take a dialogue, it is for spoken or written, everywhere applicable, and for every class this pattern is applicable. This will help you even from class 1 to upper classes. So I want to know the, and ... gap is here. I want to know the person, I want to know the position, I want to know the place, I want to know the time, I want to know the occasion or moment, I want to know the region, I want to know the explanation in the chapter, I want to know a specific thing. Okay,
particular thing. I want to know object, I want to know choice, I want to know alternative. अगर ऐसा नहीं हुआ था तो उसके जगह पे क्या हुआ होता? Alternative questions. And then way of solution, how, and then manner, and then from where it is. So let us delete like this. I want to know the person. Then who was the person? How they ask the question? With who? Who was the person sitting there, or who helped such and such character? Question is starting with who. And when they want to know position and place, they ask you question with where. When they want to know time, occasion, or moment, they ask you question with when. So when is there, then you must give the time, you must give the occasion, you must give the moment. When they ask you question with why will require you more words than when or who. So for giving why, you see, when you are giving a reason for why, so why is for reason. So when you will give the reason, then you are giving the reaction of action. You know that every action has its reaction, and sometimes it's chain reaction. So chain reaction means lots of reasons. So why के साथ ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं रीजन. इसमें आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन इज आस्क्ड. जब भी वाई वाला क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर से ज़्यादा होने के चांसेस हैं, अगर वो बिल्कुल जूनियर के क्वेश्चन नहीं है तो. बिल्कुल जूनियर के क्वेश्चन जैसे क्लास 1, 2, 3 वो तो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, या कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जबकि वो मुझसे पूछ रहे हैं. तो लीव द जूनियर्स. Next is what? A specific thing. What was the situation? What was the object? Okay. So when we are talking about a specific thing or object, okay, items, that time we use with what. What is very tricky. Sometimes it is used for reason and time also. So what is very tricky? Which shows choice. When you find the question with which, means you think that from the text. As I told you, the text you have to use as tools. तो जब भी आपसे which के साथ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको मान के चलना चाहिए कि उसमें जो चॉइसेस हैं उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है, या फिर अल्टरनेटिव देना है. अगर 2 CDs है, 2 पेन ड्राइव्स है, तो उसमें से कौन, which one is for Shamiya, which one is for Kishore, which one is for Rafi. So selective. Okay, which, alternative. Next is with how. Way means how to make tea. Okay, then you have to narrate complete process. You have to narrate complete process of making tea. Okay, how to get an account opened in a bank. So you have to write complete procedure. Go to the bank, take a form, fill up it, paste your photograph, etc, etc. Okay, way and manner and from. I have written some words here: shouted, chewed, and laughed. Shouted, chewed, and laughed. So question can be framed: who shouted? Okay, and when he shouted, what was he doing? Doing what? Okay, when he shouted, where he shouted, why he shouted. So questions are made like this. Let's go to analyze it more. According to Bloom's revised taxonomy, how question settlers, they have this yardstick and parameter. कहाँ से वो किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं? They set the questions according to Bloom's revised taxonomy. Okay, you can download its pyramid. Okay, Bloom's revised taxonomy, and you can read it in detail also. So I am taking it as a reference only. According to Bloom's revised taxonomy, basis of questions are, this is important for you, so I have taken the direct thing for you applying for your examination. So according to Bloom's revised taxonomy, they ask you question from knowledge, understanding, okay, applying, and then analyzing, and then evaluating, and then creating. So how they ask you from knowledge, now I will tell you one by one. First of all, I will take knowledge. See, I have taken
taken some space to give you more examples. First is from knowing or knowledge. So I have written here useful verbs. Which type of verbs will be helping for knowledge, or can be asked knowledge based questions. So remember, okay, knowing on your memory based. Okay, they may ask you question from location, locate. They may ask you name of any character. They may tell you to recognize. Okay, they may say you to state, means to tell, and they may say you recall the name of recalling. They may ask you from description also, describe. They may use the word repeat. They may use the word retrieve. They may say list. So when they will use questions with these languages, okay, then question can be framed like this. This will help for the teachers also, to whom they have to make questions for their students for test. What happened? I am giving you some sample examples. What happened after this, or how many characters are there? How many characters are there in the story? Or who was it that? किसने क्या कहा? Who was it that jumped into the canal, or killed the person, or tricked someone, betrayed someone? Or can you name? Can you name the person who did this? Can you name the person who did this, or like this? Or any dialogue is given, any excerpt is given, dialogue is given, piece of literature is given like this printed, and they may ask you who spoke to whom. Okay, they may ask you question from what is. They may ask you question from which is true or false. Okay, so friend, from knowledge, this type of questions they may ask you. Next point I have taken, what? Understanding. So let us go to understanding part. From understanding, which type of questions can be framed and asked? For that they will use the verb conclude. They may use the verb define in your own language. They may ask you an illustration. Illustrate. They may tell you to predict. Okay, this is all from understanding. Okay, this is all from understanding. They may tell you to predict. They may tell you to tell, batao. They may tell you to identify, पहचान करो. They may tell you to paraphrase. हालांकि ये नहीं पूछते, लेकिन पूछ सकते हैं. पैराफ्रेज. दे मे टेल यू टू समराइज. क्लास 12 में आपके नोट मेकिंग में आता है समरी. दे मे टेल यू टू कैटेगराइज. जैसे 4-5 तथ्य अगर हैं तो अलग अलग तथ्यों को आप कैटेगरी करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, यानी कि क्लासीफाई भी आ जाएगा इसमें. देखो आगे ना. फिर और कौन सा आ सकता है? दे मे से यू टू डिस्कस. दे मे से यू टू सॉर्ट. दे मे से यू टू एक्सप्लेन. एंड दे मे से यू टू कंपेयर, लाइक दिस. तो अब देखते हैं कि सैंपल क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे टीचर्स, या फिर वो कैसे बनाते हैं, जिसको आपको समझना होता है. दे मे से आस्क यू फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, तो आपको समझना चाहिए. जब अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो अगर आपके पास आता है तो आपको समझना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस वो है. तो
किस पार्ट से होगा, ये अंडरस्टैंडिंग से है कि नॉलेज से है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट में जाना चाहिए किसी पैसेज के या किसी स्टोरी के। जैसे कैन यू राइट इन योर वर्ड्स, समथिंग, व्हाट वाज द मेन आइडिया behind this, can you provide the definition, can you distinguish, who do you think has done or something like this. Next point is applying. So for application, which type of verbs are used? You also know it. Okay, such like generalize. Whatever you read there in the book, can it be generalized in the society? Can it be infer? Understood? Can it be shown? Can it be used? So they may use this type of verb. Then you should think that they are asking from the text the application part. ये सोसाइटी में कहाँ अप्लाई होगा, ये सोसाइटी में कहाँ अप्लाई होगा. सो एप्लीकेशन पार्ट क्या क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन का मूड अगर आप समझ जाएंगे तो टेक्स्ट से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर पाएंगे और वहाँ से जाके तुरंत एग्जाम्पल आप लिख देंगे. तो इसके लिए कैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे कैन यू ग्रुप बाय कैरेक्टरिस्टिक, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज. जैसे कि कोई कैरेक्टर है और उसमें बहुत सारे उसके लिए एडजेक्टिव्स आए हैं. वो ईमानदार भी है, ही इज़ ऑनेस्ट, ओके, ही इज़ जेनरस, ओके, ही इज़ कंपैशनेट. तो उसमें आपको वर्ड अटैक में वो जंपलिंग जैसे पूछते हैं तो आपको पूछें कि ये बंदा जो है 4 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर किस कैटेगरी का आदमी है, तो आपको वो एडजेक्टिव से सीधे अप्लाई करके आपको जोड़ना होगा. व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क ऑफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन. अब आपको वो कुछ बॉक्स में हिंट दे देंगे और हिंट्स देने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कैन यू अप्लाई द मेथड, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन स्टोरी राइटिंग में पूछते हैं आपको अप्लाई करने के लिए, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड. तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट है आपका एनालिसिस. आप भी जानते हो कि एनालिसिस क्या होता है. चलो रिवाइज करते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को एज ए टूल्स लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज अच्छे से समझते हो तोड़ तोड़ के, तो उसको एनालिसिस बोलते हैं. तो वो जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस बनाते हैं. ओके, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के नहीं बनेंगे. ठीक है, अभी तक हम लोग ये जो भी कर रहे थे तो ये क्या बनेंगे, लोड्स. ये क्या बनेंगे, लोड्स. लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के थे और ये भी था लोड्स. इससे क्या बनेगा, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ओके, अप्लाई में दोनों हो सकता है लेकिन ये भी बनेगा लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, लोड्स का. अब हम बात कर रहे हैं होट्स का. तो हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं. इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है मित्रों, और इसी में आपको जो है वो समय लगता है या फिर आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए कहा जाता है, या जिसमें आपका मार्क्स कम होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए आप ध्यान से देखो. तो आपको पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश करना, आपको पूछ सकते हैं सिलेक्शन पार्ट, आपको पूछ सकते हैं अरेंज करने कुछ भी, आपको पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइज, एक ही बात है. और आपको बोल सकते हैं आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, आउटलाइन करने के लिए. क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड व्हेन. जैसे कि
क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा जब, तो किसी घटना से रिलेटेड आपको पूछ रहे हैं। तो जैसे स्टोरी का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रगल पार्ट है उससे ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। स्टोरी में जो स्ट्रगल पार्ट है, टर्निंग पॉइंट के इस पॉइंट के बाद जो स्ट्रगल पार्ट होता है, इससे आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक और मैं बता दूँ, कभी कभी हाउ से भी वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको इस पर, कभी कभी वो हाउ से क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें। हाउ इज दिस सिमिलर टू दैट। तो आप क्या करते हैं कि इधर एक पॉइंट लिखते हैं, इधर एक पॉइंट लिखते हैं कि ये इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, और इसमें भी ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, इसलिए इसमें सिमिलरिटी है। ओके, हम चलते हैं इवैल्यूएशन पार्ट पे। तो इवैल्यूएशन में हमारा जो वर्ब्स होगा जो यूज़ करेंगे। ओके, तो इवैल्यूएशन पार्ट में वो वर्ब क्या यूज़ करेंगे, या इस वर्ब से जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको समझने में सुविधा होगा कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछेंगे आपको असेस करना, और असेस वर्ड आपके असेसमेंट में होता है, टेस्ट में है ना, असेसमेंट टेस्ट असेस। और वो आपको जस्टिफाई करने पूछेंगे, जस्टिफाई, और वो क्या पूछेंगे, क्रिटिक, आलोचना करने, और वो आपको जज करने बोलेंगे। तो क्रिटिक और जज लगभग वही है। ओके, एक और वर्ड इसमें आ सकता है एप्रिशिएशन। ओके, एप्रिशिएशन में भी आप किसी की बुराई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आप अगर करोगे बुराई तो किसी के रेफरेंस में करना हो कि गांधी जी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आप अपने तरफ से अपनी ओपिनियन देने से हमेशा बचना है एग्जाम में। तो एक सैंपल भी ले लें हम लोग, जैसे कि डू यू बिलीव। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, डू यू बिलीव, ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आर यू person? Okay, how would you feel if, आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, how would you feel if। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे इवैल्यूएशन में। देखो आप इसको इवैल्यूएट कर रहे हो ना, कि आप एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये रो रहा है किसी वजह से। तो आप अगर उसके जगह पे होते तो उस सिचुएशन में आप क्या करते, क्या आप भी रोते या क्या करते। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इवैल्यूएशन का हो गया, जस्टिफिकेशन का हो गया, जस्टिफाई द टाइटल है ना, क्रिटिकल आलोचना करने का हो गया कि उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते थे। तो हम लोग चलिए वीडियो के अंत में आ गए हैं, और ये लास्ट पॉइंट है आपका क्रिएटिंग, और इसको जानना भी बहुत जरूरी है मित्रों। क्रिएटिंग में पूछेंगे कि डिजाइन, वो यूज करेंगे दूसरे वर्ब क्या, प्लान, है ना, सम प्लानिंग इज देयर, सम कंपोजिशन इज देयर, सो कंपोज। और क्रिएटिंग में क्या होगा, आप क्रिएटिव समझते हो, आप जब कुछ बनाते हो, कागज का नाव बनाते हो, कुछ बनाते हो खुद से, तो आप क्या हो रहे हो, क्रिएटिव हो रहे हो। तो आपको कुछ क्रिएट करना है, किसी चीज़ को आप रिवाइज भी कर सकते हो और अपने ढंग से दे सकते हो। जैसे आप देखते हैं नया वर्जन, नया रिवीजन किसी चीज़ का आता है। और एक वर्ड है इसमें, ओके, ऑर्गेनाइज, आई हैव रिटन नाउ, ऑर्गेनाइज। इसको पहले भी हमने लिखा था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज भी क्रिएटिव राइटिंग में आ जाता है। तो हम इसको देखें कि डिजाइन, प्लान, कंपोज एंड रिवाइज के बाद इसके एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं। कैन यू डिजाइन something, can you see a possible solution, can you give or see a possible solution to, if you had access to all resources how would you deal with। अगर आपके पास सारी धन दौलत हो, हमारे झारखंड की जितनी धन संपदा हो, भारत की जितनी धन संपदा हो, सब आपके पास अगर आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे, आप क्या करेंगे। आपको IAS बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्रिएटिव हो गया। हाउ मेनी डिवाइसेस यू कैन यूज, ओके, हाउ कैन यू अप्लाई योर माइंड, ओके। और इसमें क्या है कि अपने आप चाइल्ड सोचता है और लिखता है, व्हाई डोंट यू डिवाइस, व्हाट वुड हैपन इफ, क्या हुआ होता। देखो लास्ट क्वेश्चन एक मैं ले लेता हूँ, व्हाट वुड
अगर आपको जीवन फिर से मिल जाता तो क्या आप फिर से LKG में नाम लिखवाते, क्या करते? ओके, सो फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू 6 points that will help you to understand question. First was knowing, second was understanding, third was applying, okay, fourth was analyzing, and then fifth was evaluating, and then the sixth, the latest, was creating. So keeping this in mind, if you will go through the text or if you will go through the question in your examination, and then directly you will be able to connect from the टेक्स्ट। जो आपने स्टोरी पढ़ा या पोएम पढ़ा है उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे और सीधे उस कनेक्शन से फ़ायदा उठा के आप डाउनलोड कर लोगे अपने आंसर को। आप बुक घर में छोड़ के आए हो लेकिन आपको लगेगा कि बुक आपके सामने है। ओके, एंजॉय दिस मैजिक। थैंक यू।